Hello everyone, I hope you all are doing extremely well. I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, today we are going to start our new chapter in your book Let's Learn. This is chapter number 7, Equivalent Fractions. As you know, till our previous class we have completed till chapter number 6, that is understanding of fractions. So you have already understood the related concept of fractions. Now you are ready to understand one more related concept of fractions, that is equivalent fractions. Now in this class we will study comparison of fractions. किस तरह से हम fractions की तुलना करते हैं. Let's get started with the help of one story here. A chapati, a cake and number of objects will be getting divided into number of children. Let's start here. Comparison of fractions. So first part is equally dividing a chapati between two children. तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक रोटी है, इस एक रोटी को हमें दो बच्चों में डिवाइड करना है. So both will get equal parts. हम हाफ पार्ट दे देंगे. तो इसको फ्रैक्शन को किस तरह से हम शो करेंगे यहाँ पर? You know that fractions are shown always as numerator upon denominator form. Okay, denominator is the total number of parts here. तो एक रोटी के हम कितने पार्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर? दो पार्ट कर रहे हैं. So you can see here 2 is the denominator. Okay, and each child is getting one part of this. That is why 1 is the numerator. क्योंकि हम यहाँ रोटी को equally divide कर रहे हैं between two children. So the number of equal parts are 2 and numerator will be 1. So this is also known as half or 1/2 you can call it. So share of each child is 1/2 or 1/2 or you can call it half also. Let's move to another one. Second is equally dividing two chapatis among 4 children. अब यहाँ पर हमारे पास चपातीस कितनी है? 2 चपातीस है और कितने बच्चों में हमें डिवाइड करनी है? 4 बच्चों में. ठीक है. So here we have 2 chapatis and here we have 4 children. See, सबसे पहले एक चपाती लेंगे, इसे हाफ कर देंगे. So 1 chapati is equally divided. हाफ जो है वो equal है. So again here denominator will be 2. ओके एक चपाती के हमने 2 पार्ट करे, दैट इज वाई हियर इट इज 2. अगर एक चपाती के हम 4 पार्ट करते तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाता 4. बट 1 चपाती इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अनदर चपाती इज आल्सो बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो हियर अगेन द डिनोमिनेटर इज 2 एंड न्यूमरेटर इज 1 बिकॉज ईच चाइल्ड इज गेटिंग one पार्ट ऑफ इक्वली डिवाइडेड चपाती ऑफ 2 parts. Okay children, so share of each child is 1/2 because here number of children were 4 and number of chapatis were 2. Let's take another example. Here we have divide 3 chapatis among 6 children. यहाँ पर कितनी चपातीज हैं हमारे पास? 3 चपातीज हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 6 children we have. Okay, तो हर चपाती को जब हम हाफ करेंगे हमारे पास इक्वल 6 पार्ट्स मिलेंगे. ओके, बट यहाँ पर चपाती क्योंकि 3 है तो हर चपाती के 2 पार्ट होंगे. दिस हाफ पार्ट दिस चाइल्ड विल गेट, अनदर हाफ पार्ट another child will get. So this way each chapati will be divided into 2 parts. That is why here you can see here children, denominator is 2 for everyone and everyone is getting one part of the equally divided chapati. So the each share of child will get 1/2. We can also call it, then also each child will get only half of the chapati, that is 1/2 of the chapati, right? Now let's move to the next part. Here we have concept of equivalent fractions. बच्चों ये हमने पिछले क्लास में भी प्रैक्टिस किया था. जब हमें एक फ्रैक्शन मिलता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ नंबर होते हैं और जब हम नंबर्स को एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो सी हियर, फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू, इनकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए. इवन दो दे मे look different, they are said to be equivalent fraction. So children, here you understand that when the fractional value is same, it doesn't matter, the fraction may look different, the number can be different, but the value should be same. Here you can have few examples. 1/2 is equals to 1/2. Then
2 upon 4 is also equals to 1 by 2. So 2 upon 4 is equals to 1 by 2. This is equivalent fraction. How? Because 2 upon 4, when we divided it by the same number, 2 को भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1 और 2 को 4 से करने पर यहाँ आपको मिलेगा 2. सो दैट इज वाई दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमने सेम नंबर से इसे डिवाइड करा है. सेम वे यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो बाय द सेम नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वहाँ भी आपको मिलेगा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो सेम वे 3 by 6 is equals to 1 by 2. So how you can find this? Write down 1 by 2. Now 1 multiplied by 3 and 2 multiplied by 3. So 1 3s are 3, 2 3s are 6. So same number we have multiplied numerator and denominator. That is why this is an equivalent fraction. So children, here we have understood what are equivalent fractions and we have taken the help of one chapati as an example and divided into number of children. Now let's move further and understand fractions with the help of some of the figures, and we are going to color it to show how much part that shows as a fraction. So here we have the colored part, and you know as fraction we have numerators and denominator, and denominator shows the total part. So whenever you see this figure, इस फिगर में आपको देखना है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस फिगर, दिस इज वन रेक्टेंगल हियर. यहाँ पर देखिए इसके कितने इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So here we have 8 equal parts of this rectangle. That is why 8 here is the denominator. और numerator में हमने क्या लिखा है, the number of colored part this is showing. So that we will write as a numerator. इस पूरे 8 parts में से आपको कितने parts colored दिख रहे हैं, that is the numerator. You can see here colored in red, 1 2 3 4. So out of 8, 4 parts are colored. That is why this fraction is shown as 4 upon 8 or 4 by 8. Now let's look at the another example. Here we have one more rectangle and this is showing the equivalent fraction. Let's see how. 4 by 8 is equals to 1 by 2. You can see here children, this rectangle is divided into 2 parts. Okay, so 2 equal parts are there. That is why this denominator is 2. Now how much part is colored here? 1 part is colored. That is why 1 is the numerator. So here we understood that 4 by 8 is equals to 1 by 2. So here also the fraction is looking different but it is same, because when you divide 4 by 8, इसको आप जब divide करेंगे 4 से, you will get 1 by 2. How? देखिए 4 से 4 को divide करें, यहाँ आपको मिलेगा 1. फिर हम 8 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ हमें मिलेगा 2. So this is equals to 1 by 2. So both of the fractions here are showing equivalent fractions, right? Now let's take another example. Again here we have one rectangle. This rectangle is divided into 3 equal parts. So 3 equal parts are the denominator here, okay? Now out of these 3 equal parts, you can see here one of them is colored. Okay, इस 3 में से 8 part colored है. So this is showing the numerator. The selected part is 1 because that is colored. So here 1 is the numerator and 3 is the denominator. So the fraction is 1 by 3 or 1 upon 3. Now moving on, another example we are taking of the same part. Here again we have one rectangle. This rectangle is divided into total 6 parts. 1 2 3 4 5 6. Children, you should note that the part should be equal. यहाँ जब हम एक फिगर को डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, वो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, then only we can compare, otherwise we cannot compare it. So out of these 6 parts, children, you can see 6 is the denominator and 2 of them are colored. That is why 2 is the numerator and 6 is the denominator. So same way, 1 upon 3 is equals to 2 upon 6. When you multiply it by 2, you will get 2 upon 6. So this is also equivalent fraction. Now let's move further. Are they equal? We are comparing here.
Therefore, you can see 4 upon 8 is equals to 1 by 2. As we have seen, we have divided 4 upon 8 by 4. So, we have got 1 by 2. So, both are equivalent fractions. Same way, 1 upon 3 is equals to 2 upon 6, because here we have multiplied the fraction by 2. So, 1 multiplied by 2, we have got 2, and 3 multiplied by 2, we have got 6. So, yes, they are equivalent fractions. Now, let us practice it more. Reema's mother made 2 cakes. So children, here we are taking one story problem. यहाँ पर आपकी मम्मा जैसे आपके लिए केक बनाती हैं. Just like you, there is one child here named as Reema. Reema की मम्मा ने उसके लिए केक बनाया है. Okay, 2 केक बनाए total. So first cake, what she has done? She equally divides the cake in 2 parts. First cake को उन्होंने 2 equal part में divide करा है. This line is showing the equal part and gave 1 by 2 part to Reema. इक्वली डिवाइड करने के बाद हाफ जो पार्ट होता है 1 by 2 ऑफ द पार्ट, एक पूरा केक है उसके कितने पार्ट्स करे हैं? 2 पार्ट करे हैं. 2 पार्ट में से जो एक पूरा पार्ट है वो रीमा को दे दिया. दैट मीन्स रीमा हैज गॉट हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द केक. मूविंग ऑन. Whereas she equally divides another cake in 4 parts. Okay, एक और केक उन्होंने बनाया और उस केक को उन्होंने 4 equal parts में divide करा. Now let's see how much of the part Reema has got, and gave 2 upon 4 part to Reema's brother. Okay, Reema's brother को उसे दे दिया है 2 upon 4 of the part. So children, यहाँ पर total है 4 parts. इसमें से for example this is one of the part, this is another part. So 2 by 4 of the part her mother has given to her brother, that is 2 upon 4. Now we have to see that 1 upon 2 और 2 upon 4 जो है क्या वो equal है? Yes, they are equal. क्योंकि जब हम 1 upon 2 को multiply करेंगे 2 से, you will get 2 upon 4. That means Reema and her brother have got equal parts. Now let's take another example. Here we have represented the equivalent fractions. So how we have to do it? We have to fill the colors in the following diagrams. यहाँ पर हमें color करना है और इस fraction को show करना है figure में. So children, the first fraction is 1 upon 2. इसका मतलब इस figure के कितने equal parts हैं? We have 2 equal parts. हमें 1 as a numerator show करना है इस figure में. That means this part we will color. Okay, color the numerator. Now let us take one of the color and we will color it. So here we have one rectangle. It is divided into 2 equal parts, out of which one part we will color. For example, here we have colored this part. So children, here we have colored one of the part of which, that means this is showing 1 upon 2 of the part. Now let's take another example. Here we have one more rectangle. It is divided into 4 equal parts. इस 4 equal parts में से हमें कितने color करने हैं? 2, because 2 is the numerator here. So we can directly color it. We have colored the first one. We can have colored the second one. Any of the 2 part you can color. So this fraction is showing 2 upon 4. That means children, here you can look, this part is equals to another part. So 1 by 2 is equals to 2 upon 4. They are equivalent fractions. Let's move on. Here we have another example. Represent the equivalent fractions by filling color in the following diagrams. Here also we have to color it. We have another figure here. We have here one circle. This circle is divided into 8 equal parts, as you can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have divided the circle into 8 equal parts, and out of these 8 equal parts we have to show 2 of the part of each. That means we can color 2 parts. So children, here we have colored its 2 part. So this fraction is showing 2 upon 8. Now let's take another example. Again we have one circle, but this circle we have divided into 4 equal parts. Out of these 4 equal parts we have to color any one part here. So let's color this part. This means this fraction is showing 1 upon 4 of the part. So you can directly see here, this part is equals to this part of another circle. That means they are also equivalent fractions, right children? Now let's move on further and practice equivalent fractions.
A fraction into equivalent fraction by multiplying numerator and denominator with the same number. So children, this we have already practiced. हम equivalent fraction कैसे बनाते हैं? एक fraction को आप numerator और denominator को या multiply करें same number से और you divided it with the same number. यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर ऑपरेशन मिलते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वही होता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल हियर टेक ए पार्ट. हियर वी हैव द फ्रैक्शन 1/2 और 1/2. 1/2 में 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है. 1 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करा. सो हियर वी हैव गॉट 2/4. दैट मीन्स 1/2 is equals to 2/4. This is an equivalent fraction. Let's take another example, B part. Here we have the fraction 2/3. Okay, 2/3, both the numerator and denominator we are multiplying with 2 here. So 2 2s are 4, 3 2s are 6. So again this is the equivalent fraction. Let's take another example. 1/2 is equals to 2/4 for the same thing. Then 2/3 is equals to 4/6 for multiplying it by the same number. Moving on, C part. Here we have the fraction 1/2. We are multiplying numerator and denominator by 4. हम 4 से multiply कर रहे हैं. यहाँ हमें मिला 1 4s are 4, 2 4s are 8. Are they equivalent fraction? Let's see. यहाँ पर हमें मिला 1/2. This was our fraction. इसे हमने multiply करा है 4 से. So 1 4s are 4, 2 4s are 8. So yes, they are equivalent fraction. 1/2 is equals to 4/8. Right children? Now, a fraction in equivalent fraction by dividing numerator and denominator with the same number. Children, here we have practiced so far by multiplying a number. Okay, here you will understand, even if we divide the fraction with the same number, अगर हम divide भी करेंगे numerator और denominator को same number से, then also we will get one equivalent fraction. Let's see how. Here we have one example, number A. We have the fraction 6/9 or 6/9. यहाँ हमें डिवाइड करा है 3 से. ओके, 6 को डिवाइड करा 3 से, 9 को भी डिवाइड करा है 3 से. वी हैव गॉट 2/3. सो इज दिस वन इक्वलेंट फ्रैक्शन? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर हियर. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव दिस स्क्वायर. दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. ओके, कितने पार्ट्स हैं इसके? टोटल 9 पार्ट्स हैं. सो हियर इन द डिनोमिनेटर वी हैव 9. इन 9 पार्ट्स में से हमने 6 पार्ट्स को कलर कर दिया है. सो दिस फ्रैक्शन इज 6/9. नाउ लेट्स सी अनदर स्क्वायर हियर. सो दिस वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज व्हाई डिनोमिनेटर इज 3. इस टोटल 3 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को टोटली कलर कर दिया है. सो जस्ट लुक हियर बोथ ऑफ द फिगर्स. यू विल clearly see that they are equal. आप इस पार्ट को यहाँ देखिए और दूसरी फिगर में this part. So they both are equal. We can see with the help of this figure. So 6/9 is equals to 2/3 here. Okay, we can easily see by dividing this number by same number here. Now, a fraction in equivalent fraction डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. यहाँ भी हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. सो हियर वी हैव 2/4. 2/4 वी हैव डिवाइडेड बाय 2. ओके, दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, देन ओनली वी विल फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन. सो हियर वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सर्कल. वी हैव टेकन 2 सर्कल्स. फर्स्ट सर्कल वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. पहले सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज व्हाई 4 इज द डिनोमिनेटर हियर. एंड अनदर सर्कल यू कैन सी वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दैट इज व्हाई 2 इज द डिनोमिनेटर हियर. फर्स्ट सर्कल में देखिए कितने पार्ट्स कलर्ड है. यू कैन सी हियर 2 पार्ट्स आर कलर्ड. दैट इज व्हाई 2 इज द न्यूमरेटर हियर. सेम वे यू विल सी अनदर सर्कल. इस सर्कल में एक पार्ट कलर्ड है, दैट इज व्हाई 1 इज द न्यूमरेटर हियर. सो चिल्ड्रन, वी हैव सीन 2/4 is equals to 1/2. This we have got by dividing the fraction. We have divided it with 2.
So children, here we have practiced fractions, that is equivalent fraction. We have taken many examples of figures, objects like chapatis, cake, etc. Then we have colored the figures also and understood how we get the equivalent fraction by dividing it with the same number and also multiplying it. Now this was the all concept of equivalent fraction. In the next class we will start doing the exercise of chapter number 7. So children, keep practicing, keep learning. We will meet in the next class. Thank you everyone.